Hello and welcome. Assalamu alaikum. My name is Moiz Kamal and I work for Sehat Kahani. So today is a very special day because today we are celebrating International Day of Disabled People all across the globe. And in order to raise awareness around the topic, we've been joined by three expert panelists. With over 1 billion people in the world who are currently facing one form or some form of disability, which makes 15% of the entire global population who's currently living with a disability. So, what Sehat Khani is trying to do, we're trying to raise as much awareness as we can around different topics. So that has been the agenda for the entire year. We picked up like different diseases throughout the year. Every month was dedicated to one particular disease, right? So similarly, today is a big day where 15% of the entire global population are living with some kind of disability. All these people coming together on a platform just to raise awareness. So Sehat Ghani is pretty much doing the same thing. We've been joined by three of our expert panelists. First off, we've got Dr. Mohsin with us, who is an orthopedic surgeon. We've been joined by Mr. Biha, who's a psychologist, and we've been joined by a representative from the Artificial Limb Center here, based here in Karachi, Mr. Ubaid Fatah. Assalamu alaikum. How are you guys all doing? Walaikum salam. Good. Thank you. Walaikum assalam. Very well, thank you. Great. Thank you so much for being a part of a panel today, guys. Really appreciate it. Excellent. So, G, we're going to keep this session interactive. We're not going to make it monotonous. We will have Okay. a healthy dialogue where I'll try to include everybody so that everybody can come up with some sort of pointer which can complement the other panelists' point of view as well. So, brilliant. We're going to start off our session. Let me give a slight introduction about how it's going to work out. So, we've been joined by Mr. Ubaid Fatah, who is a representative who will be representing Artificial Limb Center based out of Karachi. He'll be shedding some more light on it. So, Ubaid, my first question to you: how did ALC, which is Artificial Limb Center, came about to be a setup, and what is the connection with the Rotary Club? Right. So basically, I am a volunteer with the center, and I've taken it upon me to kind of raise awareness when it comes to disabilities. The patron is Dr. Feroz Ismail. He's based in Texas, actually, and he was supposed to be online, but it's just been a bit of a trek for him. In regards to how ALC came about, ALC is a sub division of the main organization called HASFA, which is Health and Social Welfare Association, and they were doing cleft surgeries back in the past, in the early 2000s, as well as burn victims. And through that, they came across this organization in Jaipur, India, which does prosthetic legs. And there was synergy, and the team from there came over to Karachi at Jinnah, and they were able to set up the center for Right. the Artificial Limb Center. The material comes from there, but the assembly is done in Karachi. The Rotary is involved in the sense that Dr. Feroz way on was roped in as an honorary member of the Rotary Club in Karachi. And Okay. they were anyways part of the HASFA program. So when Artificial Limb Center came into being, the Rotary decided to give them their space in Gulistan Johar, the center basically. And that's where the Artificial Limb Center operates out of. Okay, great. Fantastic. So it's a Karachi-based operation, right? It is a Karachi-based operation. It's a very small setup at the moment. The reason being that we need to. That's why I'm on board basically, just to, slowly make it grow. Absolutely. So, Abed, just to kick off the session, my next question, and after which we're going to move on to the next panelists, of course, just to set up the base of the conversation. What kind of people tend to visit the center? If you can shed some light on the demographic So of that course is the majority of the people that come on are from I would say lower income brackets, though there's no okay. restriction as such for anyone to, like, I mean, you could walk in
like you can drive it into a Land Cruiser and they would get the same sort of facility that somebody who's underprivileged would. So there's no restriction as such, but I'm guessing that because it's free and all of that, so there's a certain class of people that come, and it varies like all the way from KPK down to central Punjab to interior Sindh. People just get on a bus. They hear about this place fitting legs for free somewhere in Karachi, and they just get on a bus and they come. And they come Right. the same day they get the leg, and they leave the same day with a leg. Right, that's excellent. So it's not like, just pertain to the elite class. It can be like it's applicable to anybody who So wants to mainly like. it is for a lower socioeconomic circle, right? But if anybody from the elite class does want to go, there won't be any like, no, you're not going to get it. Anyone who walks in gets a leg. And there's no money transaction either. It's literally just works on funding donations. Excellent. Excellent. That's a great initiative. Kudos, guys. So, Dr. Mohsen, being an orthopedic surgeon, sure, you get to deal with people who have witnessed or encounter amputations. So, if you could shed some light on the process of amputation from your personal experience, is it like always the best solution, and when are the times that it might be required? Okay, thank you. So, amputation for us, in many ways, can be considered a failure of treatment. So that's the last thing on our list that we've ever considered in any situation. The Right. only thing that surpasses the importance would be life. So most of the time, somebody loses a limb would be to save a life. Uh, this is in conditions where you have an infection which cannot be treated. For example, people with diabetes uh, is on the rise in the community, and a lot of people are uh, having infections in the limbs because of that. And that's one reason that people usually end up in an amputation. Other reasons are, for example, in traumas, when you have a mangled extremity, that's the situation where you consider an amputation. Usually, there is hardly any situation where there's an elective amputation except for malignant tumors, which also over the Okay. past 1 or 2 decades, this is the trend has changed towards limb salvage surgery. So amputations from those are also are decreasing globally. But anyway, Okay. if and when the need arises, like I said, this is going to be done to protect a life, and you lose a limb just to preserve life. So it's not by usually by choice. It's like really low on the list Of of things course. to do, and now more and more. I mean, it's done more uncommonly as it was done previously. The last time I really encountered a situation where there were mass amputations was the earthquake in the north of Pakistan. At that time, Right. when uh, Of course. tertiary care facilities are unavailable, and then in situations where, for example, somebody's So I uh, find that very interesting what Dr. Saab is saying, that it's a last resort, right? But Yeah. if you hear these stories, you'll be amazed that it's the first thing that they do. that I mean, Really. situations, for It's example, see, unbelievable, right? Because of the lack of sort of facilities resources possibly, or the options resources, yes. available. It's shocking that it's like they're so like, हाँ ठीक है हाथ कटवा दिया, या पाँव कटवा दी. It's crazy. Yeah. बट बात यह है कि जाहिर है resources number one, and so many of our peripheral areas lack resources sometimes. Like I said, mass casualty situations where you have resources, but there is not ample resources for the number of people that are affected. So in those situations, of course, again, question is whether you're going to save the life or the limb, and then of course the question of saving the life always surpasses the Yeah. saving of the limb. In my personal experience, like I said, I basically subspecialize into orthopedic oncological surgery. So tumors are a situation where I have encountered amputations, but Of again, course. the first priority is always to save a limb. Absolutely. So, yeah, that's, I'm sure.
बिकॉज द थिंग इज कि हमारे पास जिस तरह आप अभी डायबिटीज के ऊपर बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, सो 19 मिलियन की तादाद है पाकिस्तान के अंदर 2019 के स्टैट्स के हिसाब से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। सो उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज में एक रिसर्च के ऊपर देख भी रहा था इनफैक्ट, तो उसके अंदर यही था कि लास्ट रिजॉर्ट जो आता है वो एम्पुटेशन का आता है, बट डायबिटिक पीपल आर प्रोन टू यू नो such circumstances because we had Diabetes Awareness Month last month, which was November. So we had a surgeon who helped us come up with a session. So that's exactly what she said. Okay, diabetes is leading is one of the causes where it comes down or boils down to getting a limb amputated. तो हम वापस अपने उन तमाम फॉलोअर्स और तमाम व्यूअर्स को जिस वक्त देख रहे हैं वो यही बताएंगे कि प्लीज अपने डायबिटीज के भी टेस्ट करवाते रहें, and anytime you need any consultation, so Sehat Kahani app is there, and currently we are giving our free consultations to everybody who comes onto our app and avails promo code free Sehat, and yeah, you're on your way to a free consultation. So Ms. Sabiha, hello. Yes. जी Sabiha. So Sabiha, आपके since you bring in a psychologist's point of view, my question to you in light of International Day of People with Disabilities would be, what role could a psychologist play to help the amputees cope with the experience or the grief that they suffer with, or suffer from? Sorry. मैं पहले तो डॉक्टर मोहसिन से पूछूंगी कि आप कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे, या इवन उबैद, कि जिन एम्पुटीज के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनकी फैमिली को हेल्प करें या पेशेंट को हेल्प करें, इज दिस द नॉर्म या नहीं? I think जो जनरल सिचुएशन विच आई वाज अवेयर ऑफ, तो उस तरह की हम यही बात कर रहे थे कि एक जगह जहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है, कि एक ऐसी चीज़ है जो कि सैल्वेजेबल है, और उसके लिए तो बात कह रहे हैं कि हर वक्त एम्पुटेशन जो है वो फर्स्ट चॉइस के तौर पे जो है इट कम्स अप। सो उधर साइकाइट्रिस्ट होना, साइकोलॉजिस्ट होना जो कि पेशेंट को हेल्प करे जी रिकवरी में, या फैमिली को हेल्प करे टू कोप अप विद दिस नहीं, ट्रॉमा। ये क्योंकि ये एक लॉस है। डॉक्टर सबिया, आपने आप जो जी। सवाल कर रही है ना वो बहुत ही ज़रूरी सवाल, स्पेशली हमारे जो जिस माशरे में हम रह रहे हैं, क्योंकि ट्रॉमा रिलेटेड चीज़ है, राइट? मतलब कि बिल्कुल। आपकी एक जिस्म का हिस्सा जो है वो आपसे अलग हो रहा है। आई एम श्योर इट लॉस है कम्स ना, विद दिस इज अ ट्रॉमा, लॉस। लेकिन जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ जी, मैं कह रही हूँ ये लॉस है, एक जाहिर है कि, और इतना ही लॉस कोई हेलो, भी स्पेशली एम्पुटेशन जो है या लूजिंग अ लिम्ब इज अ बिग स्ट्रेसर इन योर लाइफ, और इतना ही बड़ा स्ट्रेसर है जैसा कि लिविंग एग्जैक्टली, लूजिंग योर यस स्पाउस, यू नो, उतना ही स्ट्रेस होता है, एंड लूजिंग अ यस यस स्पाउस इज नंबर वन स्ट्रेसर इन योर लाइफ, यू नो। तो ये भी तो यस लेकिन उसके लिए कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो कि उनकी वो उस ट्रॉमा से निकल सके, जो ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, you know, and psychologists are trained to, you know, just listen to their stories कि उनकी क्या है, और ये एक as a psychologist I feel very trustworthy कि लोग अपनी कहानियां आपको सुनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, वो ये कहानियां सबको सुनाते हैं, यू नो, अपने घर वालों को भी, अपने जानने वालों को भी सुनाते होंगे, but they respond differently. But a psychologist actually responds differently, and that is where Empathy. healing begins. You know कि शेयर करते हैं वो सबके साथ, लेकिन दूसरा आदमी किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट इज इम्पोर्टेंट कि ताकि उनकी हीलिंग हो सके, एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू नो। जैसे कि भाई एम्पुटेशन हो गया है, अब आपने उनको प्रोस्थेटिक लिम्ब दी है, नाउ दैट पर्सन हैज टू मूव ऑन विद हिज लाइफ। और अब तो प्रोस्थेटिक लिम्ब्स बहुत जयपुर से, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा सिखा दिया, बहुत अच्छे, बहुत सस्ता, एंड यू नो वेरी अफोर्डेबल। yes वरना it तो is. isn't it, it's become very easily available. So in terms of, like, as a psychologist, what I would like to ask you is that what I understand कि जिस तरह के लोग ज़्यादातर सेंटर पे आते हैं, मुझे हैरत होती है उनकी कहानियाँ सुन के कि उनको शायद एहसास ही नहीं है कि उनके क्या हो गया है उनके साथ, क्योंकि मेरे ख्याल में उतनी हार्शनेस वैसी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि इसको भी वो एक स्ट्राइड में ले लेते हैं। और मुझे बट
somehow I understand that mental health is something we're talking about a lot recently, right? I Yes. feel that a psychologist being on board would help them at least cope with the fact that they are able to lead a dignified life, because losing an arm or a leg takes away your dignity. मैं आगे बात करूंगा इस बारे में कि बिल्कुल। तो या आई मीन, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि हाँ, उनके साथ हुआ लेकिन क्या देखिए है। और सिर्फ पेशेंट नहीं, जो केयर गिवर है उसको भी बहुत जरूरत होती है हेल्प की, साइकोलॉजिकल हेल्प की, बिकॉज जितना मरीज सफर कर रहा होता है उतना ही केयर गिवर भी सफर कर रहा होता है। जो इमीडिएट केयर गिवर होता है उसके ऊपर भी बहुत बोझ होता है, एंड इट इज नॉट इजी टू गिव या इट्स केयर नॉट। टू समबडी। और तो खाली मैं ये नहीं ये कि पूछ रहा देखिए था। कि अ, अ, प्लीज। सिर्फ उसका लिम्ब चला गया है। अगर एक यंग फंक्शनल आदमी है जो कि अपना काम कर सकता था, अपने लिए पैसे कमा सकता था, अपनी फैमिली के लिए ही वाज प्रोवाइडिंग फॉर देम, तो खाली लिम्ब तो नहीं जाता ना, ही इज लूजिंग हिज जॉब, ही कांट वर्क, यस। वो उसकी फिजिकल एग्जैक्टली। एबिलिटी चली गई है। सो वो ज्यादा बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। लिम्ब तो बिल्कुल जाहिर है वुंड विल हील, वो कोप भी कर लेगा थोड़ी देर बाद कि ये चीज मिसिंग है, बट उससे जो इम्पैक्ट है ऑन ऑन सोसाइटी, ऑन ऑन इकोनॉमी, ऑन इट्स इज पर्सनल इकोनॉमी अराउंड हिम, तो दैट्स अब रिहेबिलिटेट करना, ब्रिंगिंग हिम टू साइकोलॉजिस्ट विल आल्सो रिहेबिलिटेट द पर्सन के जिस जिस जगह पे वो था, अब लिम्ब लग गई है तो उसी जगह पे उसको वापस लेके आना। जिस जिस फंक्शनल लेवल पे वो था, तो उस फंक्शनल लेवल के ऊपर या उससे थोड़ा कम, जाहिर है 100% वो नहीं हो सकता है, लेकिन उसको उस फंक्शनल लेवल पे लेके आना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि लिम्ब लग तो गई है तो मैं एक छोटी सी एक छोटा सा स्टोरी से शेयर करूंगा कि एक इसी तरह से एक पेशेंट है मोइज, आई मीन इट्स ओके इफ आई कैरी ऑन दैट, राइट which is मोइज? या asking या ऑफ you. कोर्स प्लीज। या सॉरी, ओके। नो मैं या या मैं ऑफ कोर्स। बिकॉज आई एम लाइक या मैं यस तो यस। बात फिर आई कैन गो ऑन नॉन स्टॉप, राइट? नहीं, एक छोटी सी स्टोरी मैं ये शेयर या। करूंगा कि एक साहब थे जो रिक्शा चलाता थे, और उनके हाईवे में एक्सीडेंट हो गया, क्या कहते हैं, ट्रेलर के साथ, और उनकी टांग चली गई। तो उसके बाद जो है वो बाथरूम जाने तक के लिए भी जो है उनको जो है सपोर्ट की Help ज़रूरत चाहिए। होती थी, एंड इट वाज सो ही वाज सो डिपेंडेंट ऑन अनदर इंडिविजुअल टू डू एनीथिंग कि उनके बच्चे जब वो सेंटर पे आए थे बता रहे थे कि बिल्कुल जैसे मायूस एंड कंप्लीट लॉस ऑफ सेल्फ एंड एवरीथिंग। एंड देन वंस ही गॉट द लेग, ही इज नाउ सब्जी की दुकान खोल के he is earning his own माशाल्लाह। bread and Good. butter, which is what it does. That's how we are able to empower them back. Excellent. Yes. so Excellent. this is exactly what I said, that अगर अगर लिम्ब मिसिंग है तो उससे ही विल कोप अप, बट उसकी फंक्शनैलिटी जो डिसेबिलिटी बन जाती है, वो दैट्स मोर ऑफ एन इम्पैक्ट. So if you can reverse Yep. that situation, which you guys are doing an excellent job providing people with limbs, and getting them back into their old situation, or uh, another situation, for example, वो रिक्शा चलाने से अगर वो सब्जी की दुकान उसने लगा ली and he's Good. functional, so He's the functional, impact of yes. that disability automatically reduces. बिल्कुल। Because I personally think कि हमारे पास तो एक और भी है ना इसके way out के जी हम लग गए beggary, and beggary actually is an organized crime. It's a mafia altogether. So अच्छा है कि at least there's a platform which is giving you that kind of facility where you can cope up and get back to your daily life, which is So absolutely integral begging is a to whole any different human being. industry, Moise. Like it is a science of its own, because वो जो बैक कर रहे होते हैं ना, वो अपनी टांग लगवाना ही नहीं चाहते। मैंने एक दो दफा कोशिश की है, तो फिर डॉक्टर Yeah, फिरोज yeah, ने that's मुझे what I'm ये बोला saying. कि भाई कितनी तुम आसानी उसको हो बोलो जाती कि है। तुम टांग नहीं लगाओ, घर ले जाओ, क्योंकि वो जो टांग नहीं करके 50,000 रुपए कमा लेगा, और टांग लगाने के बाद उसको 25,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। तो इट्स इंटरेस्टिंग Unfortunate. हाउ Sad, या actually. Yeah. Yeah, unfortunate, very unfortunate. So, Ubaid, जो next सवाल ये है आपके लिए कि कौन सी conditions होते हैं? What are the conditions in which prosthetics are made available, and how long does it take to get a prosthetic via ALC? Okay, so there are for leg there are three types. One is below the knee,
one is above the knee, and then there are people who have suffered from polio. Unfortunately, Pakistan mein that is another big thing which we still haven't overcome. Yes. तो उन Yes. their legs are deformed. तो उनके लिए calipers आते हैं to keep them erect, right? तो ये तीन ठीक हो किस्म गया। के हैं। उसके बाद अभी मैं आगे उसमें बात करूँगा कि हमने आर्म्स के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इट्स इन अ वेरी R&D नेसेंट स्टेज, सिर्फ 3 लोगों को लगे हैं अभी तक। Okay. Excellent. Leg though is very, because it's been going on for almost 12-13 years, it's very efficient. You can come at 11 in the morning and leave with a leg at 5 p.m. Excellent. The fitting, everything is done there on the spot. It's formed according to your stump size and the length of the leg and all of that. For the arm, at the moment, it's taking us 4 to 5 days to Okay. give someone an arm. ठीक हो गया और मैं तो इसका फर्स्ट हैंड विटनेस भी हूँ क्योंकि आई डिड You've get a been there, chance to yes. visit ALC and it was an excellent initiative where people are all coming together to aid those who are currently facing the disability, be it in form of like losing a leg or arm. You guys are doing a great job, mashallah, excellent. Yeah, Thank kudos to you. Dr. Sawaz and the team. So, Dr. Mohsen, next step, next question आपके लिए है कि in your opinion, what are the major risks associated whilst performing an amputation, or what are the steps to be addressed or adhered to post surgery? So usually, like I said before, an amputation is performed to preserve life. So usually infected mangled limbs में या जो है ट्यूमर्स की सिचुएशन में जो amputation होती है, जो सर्जिकल उसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है. ठीक है, amputation possibly was the first kind of surgery ever performed on earth. ठीक है ना, तो सही हो that's where गया. it started. और जब पुराने ज़माने में आराम से हो जाती थी, तो now with all of this technology and everything, बस it's हाँ तो Wow. कुल्हाड़ी लेके एक्स कर दिए जंगों में जो भी। नहीं, उसके लिए देखिए, जो हमारे अर्लीस्ट इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी एम्पुटेशन के इंस्ट्रूमेंट्स थे. सो वो चीज़ तो बहुत अरसे से अवेलेबल. सो ज़्यादातर जो चीज़ें ना, जो कि द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन एम्पुटेशन इज, आप उबैद वुड नो बेटर कि जो है ना, इज हाउ एन जी. एम्पुटेशन इज डन, कि कितना स्टम्प साइज है, जी. स्कार किस जगह पोजीशन करना है, मसल्स के साथ क्या करना जी. है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. For example, अगर बिल्कुल ही short stump है, it's very difficult to fit a limb on it, artificial जी. limb on it. So proper stump size, where the wound is placed, because अगर वो बिल्कुल ही dead center आपके pressure point के ऊपर होएगा, तो then he'll have recurrent complications with wound healing or recurrent breakdown of the wounds. So that position. फिर जो issue आता है वो है muscle strength के साथ. If you just cut the muscles and leave them there, so they cannot provide the kinetic force required to move the limb later on. So we do this thing called myodesis, which is, at the end of the amputation, whatever muscle is remaining, you can reattach it to the end of the bone. So उसमें giving enough cover to the tip of the bone, फिर giving muscles something to pull on. Because अगर वो ऐसे ही आप उसको छोड़ देंगे, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, nothing will happen. So you Absolutely. actually tie them to the end of the bone so that they can provide some kind of a movement or pull against something. So Right. those are the things that are taken care of. फिर So I want to ask you, like, it's it's amazing the science or the technical stuff that goes behind the amputation. हम तो सिर्फ end में देखते हैं कि एक stump type चीज, लेकिन like for example the amputation process, like is there healing time period or a like does it require intense medication to heal, and how long does healing usually take, and is there any after amputation treatment that you need to go for a specific period of time, like? Yeah. So the idea is that you do the most conservative amputation that can suffice in that certain situation. So you need to go. I mean, you want to go below knee as much as possible.
because we have realized over time that if you have a below knee amputation versus an above knee amputation, it requires less force to propagate and ambulate. Okay, So interesting. I didn't know that. All right. so if you have a below knee amputation, with gait analysis, they've found out that you can, almost get a normal gait with a below knee amputation versus an above knee amputation. That requires a lot of force to walk on, and of course there is no knee, so that bending at the knee is missing also. This Uh, I know already because of Grey's Anatomy. And so yeah, this I've seen on Grey's Anatomy for sure, for sure. So, yeah, sorry, so, please. so in an infected, जैसे for example किसी infection के लिए आपने की है, तो it depends के whether you can close the wound or not. So इसी conservation की वजह से, I mean, you want to conserve as long of a stump as possible. So sometimes you will go just above the infected area, and then you can leave the wound open and wait for secondary healing, so that wound will close over time, and that would require much more attention, daily dressings, and this process can go on for a few weeks to maybe a couple of months. So if it's a अच्छा, it's a एक clean और cut. सवाल आपसे कि फॉर एग्जांपल एक लेग होती है, फिर कुछ सिचुएशन में होता है कि एक पतली सी टांग नीचे डैंगल कर रही होती है, वो क्या है? लाइक दिस लिटिल थिन सॉर्ट ऑफ extension of sort from below the knee, like is that deflated leg नहीं, or उसमें उसमें क्या है, देखिए, कि you have to balance between the length of the bone and the soft tissue. तो अगर आप बिल्कुल ही छोटा सा बोन का स्टम्प छोड़ देंगे, और उसके बाद जो स्किन है, that is either too long, then it'll be hanging like a a little pouch at the bottom. So the balance between how long the bone is against how long the skin is over the bone. So the idea is to get that a bone which is slightly shorter than the skin, so the skin kind of envelops right at the end like this, rather than hanging Yeah. like a tag of skin at the bottom. So amputation is just not going in and cutting the limb where you feel like yeah, cutting of it, course. because there is a lot that goes, like you said, behind it as well, where you want to cut the nerve so it doesn't actually come and touch the pressure area, because you see sometimes these stumps are extremely painful and you can't fit a limb on it where you want to. Then where the bone is, if it's too short, then of course you cannot have the proper fit. If it's too long, then it's impinging on the skin, it keeps threatening to come out, and again, in a shorter situation, you'll have a hanging skin at the end. So that's what these are. एक Badly मेरा सवाल है कि managed. आप बच्चों की कोई एज होती है, मिनिमम एज व्हेन यू कैन डू दिस इफ दे नीड टू? जी, आपने तो मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे ख्याल में 3 साल के ऊपर लगाना शुरू करते हैं, बिकॉज 3 साल के नीचे उनको इतनी अकल नहीं होती कि वो किस तरीके से मनूवर करें, और क्योंकि बच्चों की ग्रोथ भी हो रही होती है ना, तो हाँ, तो वो फिटिंग के लिए, मतलब कि जितने भी हमारे पास बच्चे हैं जो 3 साल की उम्र से आए या 15 साल के हो रहे हैं, और उनको वो हर दफ़ा जिस तरह ग्रो करते जाते हैं, उनकी हम जो है वो लेग चेंजिंग जो द लिम्ब। अब छोटे बच्चों में जो एम्पुटेशन है, उसकी जो बेसिक वजह है वो यही होती हैं यूजुअली, कि या तो उनको कोई मिलिग्नेंट ट्यूमर है जिसके लिए आप उनकी एम्पुटेशन कर देंगे, ठीक है, या कोई ऐसी डिफॉर्मिटी है जिससे जो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है जिसको जरूरत होगी. लेकिन व्हाट वी हैव सीन इज दैट द अर्लियर यू पुट दीस चिल्ड्रन इन अ लिम्ब, द मोर नॉर्मल देयर लाइफ would Yeah, become the lives of people. Yeah. in a situation like that. Absolutely. बिल्कुल सही हो गया. Continuing or taking our session further, सबिया, आपसे ये सवाल है कि इन तमाम लोग जो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ऑलरेडी जिंदगी के अंदर, और जिनको बहुत ज्यादा like after, as you mentioned, losing a limb is as close as to losing a spouse, right? So क्या steps हम ले सकते हैं? What steps can be actually introduced for an amputee to deal okay. with their grief, be it children or adults both? देखिए, उनको हमने जब एक दफा हो गया, लिम्ब लग गया है, तो आप उस लॉस को अब आपने कम करना है और आपने उनको आगे फॉरवर्ड मूव करना है, ठीक है? बिल्कुल. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जितना नॉर्मल बच्चों के लिए, मैं आई विल स्टार्ट विद किड्स। Moez, can you hear me? नॉर्मल जिंदगी में एक तो पहले तो एजुकेट, पब्लिक को एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज आर एज गुड एज पीपल, एज एबल पीपल,
क्योंकि हमारे यहाँ Yes. एक बैक ऑफ द माइंड एक ये रहता है कि एक बच्चा जिसको डिसेबिलिटी है तो उसको क्लास में भी अलग तरीके से कर दिया जाता है। बच्चे थोड़ा सा एक कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये बच्चा जो है ये हमसे हमसे फर्क है, दिस चाइल्ड इज डिफरेंट। So teachers have to educate in school, parents have to educate their children कि भाई स्पेशल चिल्ड्रन, आप कोई भी स्पेशल बच्चे को देखें या कोई भी बच्चा डिसेबिलिटी के साथ देखें तो वो उसके भी उसी तरह के इमोशंस हैं, यू हैव टू इंक्लूड करें आप उसको। फिर पैरालंपिक्स बहुत अच्छे हैं जिसमें कि आप बच्चे को डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे Okay, sorry, I don't know why it's hung. I can't see you guys, but if you can hear me, I can't hear you guys. Maybe I want to exit and re-enter. बट वी कैन हियर voice. यू। We can hear you, Beth. जी, so sorry, Sabia. Please तो continue. बच्चों को ओलंपिक्स में डालें, जो कि स्पेशल ओलंपिक्स जो हैं उसमें मतलब उस स्पेशल स्पोर्ट्स में डालें Mohit, I can't hear. ताकि बच्चे जो है वो एक हेल्दी लाइफ कर सकें, दैट इज जी। इम्पोर्टेंट। बल्कि एक यहाँ पे मैंने तो एक लेजॉन भी किया था स्पेशल ओलंपिक्स के साथ में अपने जो बच्चे थे जो आते थे जो स्पेशल चिल्ड्रन, तो और वो बहुत एंजॉय करते थे, कि उनको भी एक आउटलेट मिलती है, एक दे फील दैट दे कैन आल्सो बी अ मेंबर, नॉर्मल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि हम खेल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम, और ये स्पेशल ओलंपिक्स है इसीलिए। तो उसमें करें। दूसरे के पेरेंट्स को भी बताएं कि ये देखिए, किसी को इंडिपेंडेंट करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए आपको उसको इंडिपेंडेंट करना होता है जी। आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एक और ये माइंडसेट है हम लोग का कि अगर किसी के पास कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी हम लोग आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना शुरू कर देते हैं कि नहीं तो मुटना नहीं, हम ये कर देते हैं, तुम इधर नहीं जाओ, हम ये कर देते हैं। तो ये जरूरत नहीं होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत होती है, बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेम्बर माय फादर, ही हैड अ सर्जरी, पांव की उनकी थी, तो उसके बाद वो भी इसी तरह से हो गए थे। मुझसे मेरी घड़ी उठा दो, हालांकि वो घड़ी जो थी वो बेड साइड टेबल पे ही होती थी, एंड आई वुड से यू कैन डू इट, व्हाई डोंट यू टर्न अराउंड एंड जस्ट पिक इट अप फ्रॉम देयर। तो ये एक वो होता है कि हम सपोर्टर्स की तरफ से या जो केयर गिवर्स होते हैं उनकी तरफ से होता है कि वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बट ये लोगों को याद रखना चाहिए कि हेल्प वही होती है जहां पे आप किसी को इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं, एंड नॉट मेकिंग देम डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ। Absolutely. आई वुड से कि ये आप करें बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, कि उनको एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लेके जितनी आए। नॉर्मलाइज कर सकें जिंदगी उतनी बेहतर होएगा, राइट? और मैंने एक कैंप अटेंड किया था, वहां पे ये उन्हीं का था, प्रोस्थेटिक लिम्स लगा रहे थे, तो वो तो लिम्ब अभी उनके लगा है और वो जो है सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले गए, वो जो लकड़ी की जो सीढ़ी होती है उसके ऊपर, यस। और वो रिक्शा चला रहा था, एंड दिस वाज द फर्स्ट डे कि जब उनको वो लिम्ब लगा था। जिसको हाथ पे लगा था वो ट्रे पकड़ के वो लोग, इनफैक्ट दे वर सर्विंग, जिनके आर्टिफिशियल लिम्स लगे थे, तो दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, एंड वन हैज टू जस्ट एक्सेप्ट इट। जो कैरियर्स हैं या एज सोसाइटी में हम लोग को भी we just have to accept, हमको उनको बार बार घूर के देखने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है। They are quite normal people. Once it is fixed that they are just normal, and let them be there. बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमारी दुनिया की 1 बिलियन population out of 7 billion people, they're living with some sort of disability, which is 15% of the entire global population. So अगर आप इस तमाम 1 बिलियन को स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू हो गए तो फिर तो आपके लग गए गंदे वाले, because you can't really accommodate. So everybody should come back to normalcy at some point in time, right? So नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें उन तमाम लोगों को, बायसेस नहीं आनी चाहिए, बिकॉज एक ये भी होता है कि लेकिन डिसेबिलिटी तो बहुत किस्म की होती हैं, इकसाम की होती हैं, जिसके अंदर डायबिटीज भी आती है, जिसके अंदर HIV भी आती है, जो कि हमारा भी महीना चल रहा है, जिसके अंदर एम्पुटेशन भी आती है, जो एम्पुटीज होते हैं वो भी डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं। बट उनके साथ थोड़ा सा सिर्फ एम्पैथी दिखानी होती है कि आप तमीज से, लिहाज से, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसके अंदर बुलिंग होती है, नेम कॉलिंग होती है, चीजें होती हैं, बट दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली ट्रूली वर्क ऑन कि अब वो ना करें, बाकी सारा कुछ अच्छा है दुनिया के अंदर, इंश्योर करें कि उन लोगों को जिनको डिसेबिलिटी है उनको आप मैक्सिमम इंकरेजमेंट करें, मगर उनको एक डिसेबल्ड पर्सन की फीलिंग ना दें। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। इनफैक्ट आप सेहत कहानी ऐप के ऊपर आजकल हम ऑफर कर रहे हैं फ्री कंसल्टेशंस,
हमारे व्यूअर्स तमाम लोग जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे वो आ सकते हैं सेहत कहानी ऐप के ऊपर अपनी फर्स्ट फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं सिर्फ प्रोमो कोड यूज करना होगा फ्री सेहत जो कि हमारे बैनर के अंदर भी मेंशन हुआ है तो टेकिंग द कन्वर्सेशन फर्दर मेरा नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर मोहसिन के लिए कि डज एम्पुटेशन हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट medically or an impact on any other part of the body? सो मेडिकल इम्पैक्ट तो कुछ खास नहीं है जाहिर है एक दफ़ा जो सर्जिकल प्रोसेस है और जो वुंड हीलिंग प्रोसेस है जब आप उससे एक दफ़ा गुजर गए तो देयर इज़ नो अदर मेडिकल इम्पैक्ट बट आप ये सोचिए कि जो बाकी बचे हुए लिम्स हैं उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट है so that's the side effect so if you don't have one limb now your other leg your hip your knee your ankle is going to take twice the load that was designed to take फिर इसी तरह जब आप क्रचेस यूज कर रहे हैं तो आपके बाजुओं के ऊपर आपके एल्बोज के ऊपर आपके हाथों के ऊपर जो है वो एक्सेसिव लोड है तो यूजुअली प्रॉब्लम्स इन चीज़ों के साथ होती हैं जैसे कि हाथों में लोगों के कैलस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग क्रचेस या Right. दूसरे साइड का जो घुटना है वो अर्ली आर्थराइटिस उसको होने लगेगा बिकॉज ऑफ बेयरिंग ऑल दिस एक्स्ट्रा लोड तो ये इम्पैक्ट है लेकिन कोई जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसको हम वैसे मतलब समझते हैं कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक कोई किडनी फेलियर नहीं होता कोई लिवर फेलियर नहीं होता बट इस तरह की चीज़ें एसोसिएट हो सकती हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही पेनफुल लिम्ब है जिसकी वजह से आप लंबा अरसा दवाएं खाते रहेंगे तो उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं ठीक है फिर जो ओरिजिनल डिजीज थी जिसकी वजह से ही हुआ उसके इम्पैक्ट हैं फॉर एग्जांपल अगर एक लिम्ब इफ यू हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज तो यू कैन लूज द अदर वन एज वेल Absolutely. तो इस तरह के इम्पैक्ट्स हैं बट कोई इंटरनल ऑर्गन इम्पैक्ट नहीं होता डॉक्टर साहब आपसे तो बड़ी मुझे लाइक वो वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि ये मैं एक न्यू डॉक्टर द गुड डॉक्टर देख रहा था तो उसके अंदर एग्जैक्टली यही था मैं परसों की बात है कि एक लिम्ब रिमूव हो गया डायबिटीज की वजह से फिर उसके बाद दूसरा लिम्ब रिमूव हो गया था उसका डायबिटीज की वजह से so all these programs are also creating a lot of awareness so बिल्कुल yeah I बिल्कुल can बिल्कुल resonate exactly ये एक सिनेरियो था गुड डॉक्टर के अंदर नए सीजन के अंदर yeah throwing that out there हाँ नहीं बिल्कुल so these देखें these things have a great impact on society as well people start to understand diseases they start to understand that these things do happen तो जी ये एक तरह से अच्छा भी है दूसरी तरह से कुछ मुश्किलात भी होती हैं कि पेशेंट्स आते हैं and they want to they sometimes think they know more and they sometimes do have more information बिल्कुल ऐसा नहीं है कि they're always wrong but उनके पास कई बार हमसे ज्यादा information भी होती है about things because of this all this true information available outside the only issue is how to process this information वो जी उनके पास नहीं होती जिसकी वजह से it becomes a very difficult process to explain to them their situation and the options बिल्कुल ठीक हो गया बिल्कुल ठीक हो so गया yeah, this is the challenge that we face almost every day now yeah what sorry come again what was that I didn't hear that I said this is a challenge that we face while treating patients right every of day now. course Yeah. absolutely thanks to WebMD and Google like around 17 billion results in like 2 seconds 0.2 seconds and thanks to a lot of Netflix yeah तो उसकी वजह ये ना कि देखें maybe I have the same information it's only the way we process this information is absolutely different बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो गया जी so Abed next question आपसे है कि how does ALC Artificial Limb Center help the prosthetic recipients develop their coping skills in everyday life and what are the hurdles that you guys actually aid these amputees with So this bit of the process is, I would say, lacking because since I have moved back to Pakistan, it's like 2.5, 3 years, and बीच में COVID भी आ गया था, so I wasn't able to contribute like I would have liked to. सबिया साहिबा भी यही बात कह रही हैं इस सिलसिले को लेके कि कोपिंग जो है वो उसकी एक मेथड होगी या होनी चाहिए या एक सिस्टम होना चाहिए जो अभी फ़िलहाल नहीं है तो हम मेरे रिसेंटली 1 साल पहले हम लोगों ने फिजियोथेरेपी रूम एक
अलॉट किया है जहाँ पे Okay. फिजियोथेरेपिस्ट सिट्स एंड काइंड ऑफ मेक्स देम do their limb movement or whatever after they have got the fitting. But in terms of mental support, is not. And I mean, this due to the Sehat Kahani initiative right now, what we're doing. I will discuss this after, where we can figure out a way to bring in a psychologist and have just conversation with people. And to be honest, they don't like all they need is just someone to talk to, and Yeah. listen to their story. Nothing Good. else. So yeah. So here we can definitely look into that. जी Yeah. आपसे बात करेंगे फिर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके और कई दफा देखें हीलिंग कुछ नहीं बोल के व्हेन यू आर सिटिंग विद अ थेरेपिस्ट तो जरूरी नहीं कि हर दफा पेशेंट कुछ बात ही करे देयर आर सो मेनी सेशंस व्हेन द पेशेंट इज जस्ट क्वाइट एंड डजंट से अ वर्ड बट दैट इज आल्सो हीलिंग यू नो बिकॉज़ हीलिंग इज अ प्रोसेस हीलिंग ऐसे नहीं हो जाती कि आजा बैठे और आपकी हीलिंग हो गई हीलिंग एक कोई सेशंस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट सिर्फ रो के चला जाता है डजंट अटर अ वर्ड यू नो या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट बिल्कुल खामोश होता है कुछ भी नहीं बोलता है और थेरेपिस्ट भी खामोश होता है इसलिए कि यू जस्ट आप इस तरह से नहीं कर सकते कि वो बट दैट इज थेरेपी दैट इज हीलिंग Yeah. सही तो इट इज Because there's so many इम्पोर्टेंट times. साइकोलॉजिस्ट हो आई डू के सॉरी डॉक्टर साहब आप हाँ बताएं फिर मैं बोलूँगा नहीं बोले हो नहीं डॉक्टर मोहसिन कुछ कह रहे थे अच्छा मैं ये कहने लगा था आप वो मेंटल पार्ट की तो डिस्कस मतलब दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट आपने फिजियोथेरेपी का जिक्र किया तो हमारी नज़र में बेसिकली फिजियोथेरेपी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन एंड अराउंड दिस लिम्ब फिटिंग प्रोसेस ना कि सिर्फ बाद में बल्कि अभी जब नई एम्पुटेशन हुई है तो उसके बाद जो मसल्स हैं उनका फंक्शन उनका ब्रेन में उसकी जो आप कह सकते हैं कि कनेक्शन वो दोबारा से रीवायर करने की जरूरत है कि क्या चीज को मूव करती है ठीक है बिकॉज Yeah. इट डजंट वर्क द वे इट यूज्ड टू वर्क बिफोर Of course. तो to make स्ट्रेंथनिंग new ऑफ द मसल neural pathways yeah बिल्कुल developing those and then suddenly sometimes after amputation you start developing contractures of the joints that are already there because muscle force का imbalance हो जाता है for example like if you lost a lot of the frontal muscle which is extending the knee so you'll start having a flexion contracture on the knee और फिर अगर आप इसको initial time में छोड़ दें और ये एक दफा सेट इन हो जाए it's very difficult to take the limb out of a contracture and then it Wow. is very difficult to fit a limb on it. I'm sure आपने देखा होगा कि below knee amputation है and it is the knee has a flexion contracture. You cannot straighten yes it out. How will you put a limb on it? So so this I needs to be mean addressed very early on with physiotherapy for strengthening, for keeping the joint in motion before you get to the step where uh, the limb is fitted. इस तरह की चीज तो हम खैर जब एम्पुटेशन होती है तो हॉस्पिटल में भी इसका ख्याल करते हैं समटाइम्स यू पुट द लिम इन अ स्प्लिंट और अ प्लास्टर right after amputation just to prevent a contracture like that from forming but sometimes these things will get skipped and it will have a great impact on the functionality later on so Yes. so usko bhi so should be I mean with focused regards to talking to Dr. Mohsin, abhi mujhe dobara ek I had a light bulb go that a lot of these people may not come instantly, like that's the interesting bit also. Like some of them have had the amputation done a while ago, maybe even months ago. yeah And so maybe raise awareness on the fact that physiotherapy goes hand in hand with Okay. amputation. And in terms of the mental health ecology, they say recently we started art therapy, okay which is basically a bunch of children 5 to 12-year-olds. Hamara first session abhi 2 weeks pehle tha, where these friends of mine, they run a studio, art mindful studio in Karachi. So we got them over and we immersed the children with art, and it was unbelievable to see them Sure. get उनके पास तो education भी नहीं है, like they're not going to school, and it was just amazing to see them just paint and go through this whole process from start to end and be so happy about it. So that's another way to cope. yes, very Coping के good लिए हम लोग ने ये शुरू किया. बिल्कुल बिल्कुल So basically, it has to be a multidisciplinary thing.
from getting an amputation to recovering psychologically, to recovering physically, to strengthening psychologically and physically. और So all सपोर्ट of सिस्टम that. भी सपोर्ट Yeah, सिस्टम आपका जो है ना उसको true. आपने स्ट्रॉन्ग बिल्कुल करना है। बिल्कुल आपके केयर गिवर्स को, आपके बिल्कुल इर्द ऐसा गिर्द ही जो है। लोग हैं उनको यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट वो भी सिस्टम। फाइनाइट उसके ऊपर टाइमलाइंस होने चाहिए कि व्हेन टू बिकम इंडिपेंडेंट। यस, ये सपोर्ट सिस्टम की भी एक लिमिट होने चाहिए कि भाई बिल्कुल यू हैव बिल्कुल। टू गेट थ्रू या द प्रोसेस एंड देन गेट आउट ऑफ इट, नॉट यस, नॉट और यही आई थिंक मोहसिन आप डॉक्टर मोहसिन आप बता सकते हैं कि कितनी जल्दी आप समझते हैं कि पेशेंट जो है वो नॉर्मलाइज हो सकता है। as far as physical normalization is concerned, तो within 3 to 4 months ठीक है, नॉर्मलाइज हो सकता है। जी जी ओके मतलब उस वक्त तक तो उसको सपोर्ट की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी, दैट्स राइट। है ना, अब 3 to 4 months, जी जी राइट। उसके बाद भी तो हो सकती है डॉक्टर मोहसिन लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट ग्रुप्स में और सबीहा अभी बात कर रहे थे सेशन से पहले कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज जो लैक करती है वो है दोस आर सपोर्ट ग्रुप्स so we need to come up with a mechanism where we can actually inculcate these support groups into the environment where people can go and freely talk. It's not just pertaining to amputees, it can be anybody, right? Like Yeah. people with any kind of disease or illness. मगर हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम का वो भी नहीं है, एक क्राइटेरिया भी नहीं है। तो क्या आप ये कहते हो कि 3-4 महीने तक करें उसके बाद लाइक जिस तरह हम बाहर के ममालिक में देखते हैं people go into support groups all the time, like even after a trauma has like occurred, they would go to these support groups and they keep on like to talking it out. So don't जी you वो think that's kind of viable? वो तो ठीक है, देखिए एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट टाइमलाइन टू टू हील, रिहेबिलिटेट। मेरे जी कहने का मतलब ये था कि फाइनाइट सपोर्ट इन द सेंस दैट देयर हैज टू बी एन एंड पॉइंट ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट, not right without an right end point. It cannot बिल्कुल go on and on and on. Of course, यस, जी support for whatever is required, but बिल्कुल it has to be incremental. कि absolutely आहिस्ता आहिस्ता जो है वो they have to come नॉर्मलाइज। towards as much in normalization and बिल्कुल independence as possible. और सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, सपोर्ट ग्रुप यही होते हैं ना कि पीपल शेयर देयर स्टोरीज, बिल्कुल अपनी जी सक्सेस स्टोरी, और फिर आप उसी से इंस्पायर होते हैं कि भाई ये आदमी बिल्कुल देखें ऐसे हो गया है, बेहतरी की तरफ चला गया है, तो यू लर्न फ्रॉम द अदर पीपल स्टोरीज, और उनके एक्सपीरियंस से आप लर्न कर रहे होते हैं। सपोर्ट ग्रुप से यही होता है, और आपको बिल्कुल फैसिलिटेट करती हैं वो सारी जो स्टोरीज होती हैं, वो आपको हेल्प आउट करती हैं कि भाई आप भी नॉर्मल हो सकते हैं। तो आई बिल्कुल थिंक ऐसा ही है। सपोर्ट उसमें जो एप्रीहेंशन है हमारे यहाँ वो भी काफी रोल प्ले करती है ना, कि अपनी बात कहना और फिर कैसे उस बात को दूसरे प्रोसेस करेंगे, या जी तो वो एप्रीहेंशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक विद एजुकेशन टाइम इस पे कि आई मीन जजमेंटल कंट्रोल नहीं हो। कर सकते एक्चुअली हम लोग का ये एक है ना कि वी आर वेरी जजमेंटल, कि किसी की हैं। जी स्टोरी सुन के एंड वी थ्राइव ऑन दिस, कि किसी का स्कैंडल बन जाए, किसी चीज का सेंसेशनल वो हो, कोई खबर मिल जाए, तो इस तरह का हम लोग का एक नेचर है। तो या वन हैज टू चेंज, एक पूरी सोसाइटी हैज टू चेंज कि नहीं, ये सारी ये दुनिया है और इसमें इस तरह की चीजें होती हैं, एंड दे शुड बी जस्ट बहुत फैक्चुअल तरीके से इनको लेना चाहिए। इनको कोई स्कैंडलाइज करने की जरूरत नहीं है, या इनको ऊपर कोई इनको इतना डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक चीज हुई है, हो गई है, नाउ वी हैव टू मूव ऑन। So this absolutely is, Also, I feel like Pakistan is not very disabled friendly generally. yes, Um, that's something that we need to also have conversations around, that yes, even when you're going to a mall or just out in public or whatever, we need yeah to be more disabled friendly. yes, Yeah, totally. like as you see abroad, they've got trams, they've got special parking for disabled people, they've got like special bathrooms and stuff. But as you mentioned about in Pakistan, we are not disabled friendly. So it's a conversation that we all need to take up. So that's what's happening these days, right? I remember back in the 90s or the early 2000s, there was no conversation that was happening. But at least we're moving towards the direction, like, we're No, having we are, such. we are, we are, Alhamdulillah. we are. So that is something that is happening. Sabiha, मेरा एक और आपसे अल्फाज है अपाहिज, मुझे नहीं पता उर्दू में अपाहिज जो है वो अल्फाज जो लफ्ज़ है वो है ही नेगेटिव, या उसको हमने नेगेटिव कर दिया है, क्योंकि
उसको बहुत ही कॉन्डिसेंडिंगली यूज करते हैं, अपाहिज है या यू नो। Yeah. थोड़े Yeah. नैरेटिव्स भी चेंज करने की जरूरत है ना, कि ऐसे अल्फाज बोलें, ऐसी चीजें बोलें जो कि दूसरे को हर्ट ना करें। मतलब यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस कि जैसे पहले पहले बहुत आसानी से लोग, अब थोड़ा बहुत चेंज हुआ भी है वैसे, बहुत जी, आराम से लोग कह देते हैं अंधा है वो, है बिल्कुल। जिसको, लेकिन एक यू गेट अ बेटर वर्ड कि नाबीना कह देते हैं लोग, या यू नो, तो दैट इज अ बेटर वर्ड। जी जी। तो इट हैज चेंज्ड, becoming better, but still a lot has to be done. A lot has to be Absolutely. So my last question to you, Sabiha, and then we're going to move on to Dr. Mohsen and Obed, talking about their final questions, would be like any advice that you can give for the people who are associated or the staff that works on at these centers who deal with the amputees on a daily basis. Your take on having support groups for people with disability, your experience, if you can share something. देखिए, जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है, किया जा सकता है टू बिकम काउंसलर्स, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं, उनको भी थोड़ा एक शॉर्ट टर्म काउंसलिंग के कोई कोर्स वगैरह भी कराए जा सकते हैं कि पेशेंट को या पेशेंट का जो केयर टेकर है उसको किस तरीके से आप थोड़ी सी बहुत काउंसलिंग कर दें, ताकि उसको पता हो कि किस तरह हैंडल करें, इमोशनली किस तरह हैंडल करें। और फिर आजकल जैसे कि कोविड है, तो कोविड में भी यू नो इनके तो डबल चैलेंजेस हो जाते हैं, Absolutely. जो एम्पिटीज हैं, मतलब देव ऑलरेडी लॉस्ट अ लिम्ब, और उसी तरह से रहे, मतलब उनको दे शुड बी टेकन एज अ नॉर्मल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, कि भाई वो भी वही करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं, सारी Social चीजें इस distancing, तरह से, yes. जैसे कि कोविड में हम सब लोग कर रहे हैं उसी तरह से उनको भी किया जाए। उनका एक सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो हर किसी को ही कहती हूँ, मतलब मदर्स को कहती हूँ, बच्चों को कहती हूँ, हर किसी को कहती हूँ कि आपका सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हमारी देखें एक ये नेचर है, वी आर वेरी पैरानॉइड पीपल, कि हम लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि चीट बहुत होता है, तो जाहिर है हम लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते, बट वी हैव टू चेंज। जरूरत होती है दूसरों की सपोर्ट की। आपको, अब आपके घर में अगर एक डिसेबल्ड बच्चा है या डिसेबल्ड कोई आपका पेरेंट है या हस्बैंड है या कोई है, वाइफ है, तो यू डू नीड सपोर्ट। तो आपने आपके घर, आपके इंस्टीट्यूट में जो लोग हैं उनको ही थोड़ा सा ट्रेन करें कि लोग सपोर्ट कैसे हासिल करें, अपने अपने अराउंड, अपना जो घेरा है उसको बड़ा करें, जो ट्रस्टवर्दी पीपल हैं उनको उनका सपोर्ट हासिल करें, ताकि उनकी लाइफ आसान हो। यू नो, अब मेरे घर में अगर कोई पेशेंट है तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है ये, और मेरा अगर बच्चा पेशेंट है, डिसेबल है, तो मेरे लिए बहुत, लेकिन मेरे पास अगर सपोर्ट है, अगर मेरी अच्छी दोस्तें हैं, अगर मेरे घर वाले, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे मतलब पेरेंट्स हैं या मेरी सिस्टर्स हैं, या वो लोग अगर मेरे पास हैं, तो मुझे उसका सपोर्ट मिलेगा। तो आई थिंक यू हैव टू टेल दिस टू योर स्टाफ, कि जब आपके उनको थोड़ा सा ट्रेन करें इस तरीके से ना, कि किस तरह से सपोर्ट दिया जाए। I बिल्कुल would say. ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। Obed, maybe you can like train your staff as well with regards to like give them trainings. Yeah, so I mean, interestingly, the majority of the staff, and it's a very small team, like maybe 8-9 लोग हैं या 10 लोग हैं, वो Yeah. शुरू से हैं 2008 से, एटलीस्ट उनमें से 7-8 लोग। तो with over time and with coming across so many people, they definitely, they are empathetic souls or empathetic people, hence they have been able to be here for the past decade or so, right? But लाइक जिस तरह सबिया साहिबा कह रही हैं कि उसमें एक प्रोफेशनली या थ्रू अ सिस्टमैटिक अप्रोच उसको देखना जो है वो फ़र्क होता है, और एक खुद ही से Yeah. सेल्फ एवोल्यूशन फ़र्क होती है। तो या दैट्स समथिंग टू डेफिनेटली लुक इनटू। या एक शॉर्ट टर्म काउंसलिंग करवा दें अपने, क्या नाम है, स्टाफ को। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टाफ्स का। बेसिक काउंसलिंग की स्किल्स है ना, वो सिखवा दें स्टाफ को, तो दैट विल हेल्प। And I also believe in energy, like if you're sitting with somebody and they have a certain energy, it does rub off on you, and you absorb that. So to deal with that, also you're taking it to your family, that energy, you're taking it to your home. So that's also something to डेफिनेटली, work around. बिल्कुल। Of course, absolutely. So, Dr. Mohsen, parting question
for you कि आपके experience में how, like, if we were to summarize our entire session pertaining to amputees, आप क्या कहोगे कि कैसे, like, how do you get them back to a normal lifestyle? What is your advice that's given to your patients? So, like any disease, basically, a multidisciplinary team approach is the best. So everyone who's involved with the patient care is on board. To the person who's treating the patient's disease, to the person who's performing the amputation, to the person who's initially taking care of, for the nurse in the hospital, the physiotherapist at the hospital, discharge Yes. process, then proper handover to psychologists, to these centers where these limbs are going to be fitted later on. It has to be streamlined, so the patient automatically knows this is number one, this is number two, this is number three, and that's something which is really missing. Amputation is done, patient is discharged from the hospital, then he doesn't know where to go. Then 6 months later he finds out, oh, I have to go to this place which fits limbs in Karachi for me, and then like Abed said, sits in a bus and comes there. So if somebody would actually tell them on the first day that, look, you're going to get an amputation, this is not the end of the world, we still have a process, you will get a limb, and all of this will happen one by one. So probably it will be very easy for them to Yeah. get into this new situation. So I think that's lacking, and if at least that process can be created, that would be really, really great. And like, we're trying to generate awareness. I'm sure people are listening to this, and if they know someone around them, they will pass on this information. And if Of course. ever they come across someone who's going to go through the process, they should know that all of these people are involved in your care, at बिल्कुल least. बिल्कुल ठीक हो गया. बेहतरीन है. So Abed, last question for you. प्लीज हमें बताएं कि ALC जो लोग अभी देख रहे हैं और जो लोग बाद में देखेंगे इस सेशन को, उनके लिए आप बताएं कि how, what is the mechanism to donate to ALC? Right. So first of all, Dr. Mohsin Saab, thank you so much, and Sabiha साहिबा, थैंक यू सो मच. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आप लोगों को और जो है मेक यू सक्सेसफुल इन व्हाटएवर यू intend to do in your lives. The donation process is very simple. Moise, I can give you the email address. You can reach out to ALC on that email address. We have a registered organization, Haswa, which has a bank account, and you can donate to that. There's no amount that needs to be donated. It could be 5 rupees, it could be 5 lakh rupees or whatever. It's up to the individual. Pakistan se to donate karna bahut aasan hai. We are working on, we have a lot of people outside Pakistan who want to donate, but we are working on that right now to make that system easy for people. Yeah. ठीक है जी. आप उबैद हमें देगा अपना ईमेल एड्रेस, हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसको, एंड इंशाल्लाह I'll train your staff counseling के लिए as a donation. अरे वाह. Thank you. Okay. अरे वाह. Thank you so much. Teach them counseling skill. बिल्कुल बिल्कुल. Maji. Just out of curiosity, Shukriya can I ji, बहुत बहुत ask a shukriya. simple question? That for example, when you making a limb, how much does it cost actually Yes. at your center? I To had you, that. the I cost have to that you? in mind. So a leg at the moment costs around 10,000 rupees. जब इंडिया से आ रहा था तो 8,000 रुपए का था, लेकिन ट्रेड, you know how it is between India and Pakistan. So now we've shifted to getting the import from China. So the price has slightly gone up to 10,000 rupees for a leg. For the arm, it's been quite a rough ride in that regards, because 5 साल से उसके ऊपर research चल रही थी कि sensory arm हो, कि you kind of, your brain give you the signal to move your fingers or your limb or whatever, but that was costing to around 400,000 rupees per arm, which is of course not sustainable. So we started working on it, and right now we are standing at an arm where below the elbow है और यहाँ पे एक button है जिसको आप दबाते हैं तो you can move it, or your fingers can move
based on that. और वो अभी 30,000 rupees का जो है cost कर रहा है. We have an in-house engineer who's working on it, but it's work in process. The arm is like, we're working on that. Sure. Great. Thank you. Great. Dr. Sabiha ne to kar diya volunteer donation. She's going to be like, she'll be counseling your amputees, and that's excellent. Which them, I mean, I'll we've got teach the them how person to counsel over there. patients. Short term. छोटी सी counseling That's सिखा दूंगी. great. That's excellent. So I'll connect you two later, inshallah ta'ala, and Please then we do. can take it further. Excellent. Thank you so much, Dr. Mohsin. Thank you so much, Dr. Sabiha. Thank you so much, Obed. आप तीनों आए हमारे प्लेटफॉर्म पर और हमने excellently एक बात करी International Day of People with Disabilities के ऊपर. Every year we celebrated, and this year we tried to raise awareness around amputations. That is just one of the disabilities amongst a lot of other disabilities that are experienced or witnessed globally. So उन तमाम लोगों के लिए थोड़े से empathetic रहें, उन लोगों को equally treat करें जो disability के को face कर रहे हैं, और हमारा सेशन देखें और सेहत कहानी ऐप के ऊपर आएं और अपनी first free consultation लें by just using promo code free sehat. Until next time, it's me, Moiz Kamal. Thank you, Moiz. Thank you. Thank you, so Moin. much. Thank you for organizing Allah this. Hafiz. Great. Allah Allah Hafiz.